today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 7 English grammar, that is figure of speech. So let's begin with this lesson. Figure of speech क्या होती है? It is a deviation from the ordinary use of words. क्या होता है deviation? Figure of speech क्या होता है? It is a deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness. ये क्या होता है? Deviation होता है, जो normal words होते हैं उनसे थोड़ा different words होता है. किस लिए यूज होता है? उनकी effectiveness बढ़ाने के लिए, कि उन्हें देखने में बहुत अच्छे लगे, पढ़ने में बहुत अच्छे लगे. बेसिकली इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज. क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें क्या होता है? दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड ऑफ फ्रेज. इसमें सिंगल वर्ड होता है और फ्रेज होता है. इट मे बी अ सिमिली, आपकी सिमिली भी हो सकती है, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन हो सकती है. टू कन्वे द मीनिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग. मीनिंग कन्वे करने के लिए जो दूसरा हो लिटरल मीनिंग से. Like read the following poem. Here is the daffodil poem, which has the figure of speech. It is by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw it at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So let us now look at the some lines. I wandered. This is why wandered lonely as a cloud. So here the poet is comparing himself to a cloud. यहाँ पे क्या हुआ? पोएट ने अपने आप को कंपेयर करा किससे? क्लाउड से. द क्वालिटी दे बोथ शेयर इज अ वंडरिंग. जो क्वालिटी क्या शेयर कर रहा है कि दो क्लास की तरह वंडर कर रहा है, क्लाउड्स की तरह. सो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड. हियर द पोएट इज कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डैफोडिल्स. पोएट क्या कंपेयर कर रहा है? नंबर ऑफ डैफोडिल्स से कंपेयर कर रहा है. ही सीज टू अ क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल होता है, उससे डैफोडिल्स को नंबर्स को कंपेयर कर रहा है. In both the lines, two things are being compared. इन दोनों चीजों में दो चीज कंपेयर हो रही है. The difference between two comparison is in the first line the comparison stated clearly stated a comparison stars और clouds उसमें poet में comparing it और clouds में. So while in the second it is implied. Second में क्या करा? Imply करा गया है. The figure of speech used in the first line is simile. First line में जो figure of speech use हुई है वो क्या है आपकी? That is simile. And what are figure of speech? Figure of speech क्या होती है? Why do we use them? और हम इनको use क्यों करते हैं? Figure of speech are words और phrases. क्या होता है? Words होते हैं, phrases होते हैं that depart from straightforward literal language. जो depart होते हैं straightforward literal language से. Figure of speech are often used and crafted और emphasis. Often use होती है, craft होती है, emphasis होती है, फ्रेशनेस के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए और क्लैरिटी के लिए. सिमिली क्या होती है? दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच. सिमिली बहुत कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच है. इट डायरेक्टली कंपेयर्स वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. सिमिली में क्या होता है? कंपेयर होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, यूजिंग वर्ड्स लाइक as though, as if, as like. Examples: eyes as blue as the sky and deep like two oceans. In metaphor, in the second line of poem, the poet has used a metaphor. Poet क्या use कर रहा है? Metaphor use करता है. This is similar to simile. किसकी तरह similar होता है? Simile की तरह, but indirect comparison use करता है. It compares two things by saying one thing. ये compare करता है two things को क्या कह के, एक चीज कह के in another thing में. It does not use the word like or as. ये like और as को use नहीं करता. He was lion in the battlefield. She was a spring flower. ये क्या है? मेटाफर है. Now personification क्या होता है? Continuing with the poem, let us look at another lines. Fluttering and dancing in the breeze. Here is the poet gives the daffodil which are non-human. Daffodil क्या है? Non-human है. The quality of being human and dancing. The figure of speech used here is personification. The quality of being human and dancing use हुई है. जो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन. उसको क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जिसका क्या मतलब होता है? मीन्स मेकिंग इनएमिनेट थिंग्स बिहेव इन वेरी ह्यूमन लाइक वे. कि मतलब जो इनह्यूमन थिंग्स है उनको ह्यूमन थिंग्स की तरह बिहेव करने के लिए फोर्स किया गया. लाइक एग्जांपल, द विंड विस्पर्स सीक्रेट्स इन माय ईयर्स. विंड विस्पर कर रहे सीक्रेटली ईयर्स में. ये क्या? पर्सोनिफिकेशन है. नाउ हाइपरबोल क्या? एंड अनदर लाइन, 10,000 saw I at a glance.
Here the poet is exaggerating the number of daffodils. Poet क्या कर रहा है? Exaggerate कर रहा है number of daffodils that he saw that day. जो उसने उस दिन देखे थे, definitely he would not have counted. उसने वो count नहीं करे each day or every flower से. This is just a way of saying. ये क्या है? Just way of saying है that he saw a great number of daffodils. उसने great number of daffodils देखे थे. The figure of speech used here is hyperbole. जो figure of speech used है वो क्या है? Hyperbole है. Hyperbole is another very commonly used figure of speech. ये दूसरी बहुत commonly used hyperbole है. Figure of speech है, sorry, which simply translate means exaggeration. वो simply translate कर देते means exaggeration. Like example, 1,000 times I begged his pardon. A city filled with misers and louters. Alliteration क्या होता है? Remember this popular tongue twister. ये क्या है? Popular tongue twister है. She sells shells on the seashore. The figure of speech used here is alliteration, where the sound of a word is repeated. The sound of words है वो repeat हो रहा है, like she sells seashells on the seashore. So often है ना line एक ही line में repeat हो रहा है. Alliteration implies the repetition of the same sound. Alliteration में क्या होता है? Repeat होते हैं आपके same sound और letter usually beginning of the words में. A very common example of alliteration, बहुत common example alliteration का which we would also recognize with would be a tongue twister. वो क्या होता है आपका? Tongue twister भी होता है alliteration. Example: Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some bitter butter to make the bitter butter better. So this is the alliteration. Now onomatopoeia. Comics can be so interesting to read. Comics बहुत ज़्यादा interesting होती है reading के लिए, especially the special effects like crash, boom. So these are figure of speech too. ये क्या है आपके figure of speech है? Why they are known as onomatopoeia. इन्हें क्या कहते हैं? Onomatopoeia कहते हैं. Don't worry. The only thing about this figure of speech is spelling. क्या है? खाली इनकी spelling होती है exclamation mark. Once you have mastered that, the figure of speech is the easiest to recognize. एक बार आप इसको समझ गए तो ये बहुत easy होती है recognize करने के लिए. It uses the sound of whatever it is describing. उसकी sound use करती है जो उसको describe, like crash, boom. So ये क्या sound आती है इसमें जिसको describe कर रहा होता है? The tinkle of the bangles, the jingle of the bells, the rustling of the strings. Twinkle, jingle, rustling. ये क्या है आपकी onomatopoeia है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.